Hello friends, welcome back to another video. In this video, I will be providing the solution of our challenge be Bop Boop, a chatbot challenge, ramp up's last lab that is implementing an AI chatbot with Dialogflow ES. Okay, before starting the solution, I simply want to inform you that I already uploaded the solution of the previous 3 labs that you can simply access by clicking on this top right icon I button. आप जैसे आई बटन में क्लिक करेंगे आपको तीनों लैब का सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट दिस लैब, ओपन इट एंड वेट फॉर द पेज टू लोड. Once the page get loaded, click on the Start Lab button and wait for the credentials to be loaded up. We need these credentials to log in into our Google Cloud console. Simply right click on Open Google Console and open it in private window or in incognito mode. Otherwise, you will face certain issues. अगर incognito mode में open नहीं करते हैं तो problem आती है. Email ID will be automatically pasted up. Simply click on the next button. We simply need the password. So password is given to us. Password is this one. Copy this. Come back to here. Paste it here. Click on the next button. A welcome message will arise. ओके, इन माई केस वेलकम मैसेज इज राइज. मेरे केस में वेलकम मैसेज नहीं आया है, यानी कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन की पॉपअप भी नहीं आएगा. कई बार ऐसा होता है कि एक वेलकम मैसेज आता है, तो यहीं पर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का पॉपअप देखने को मिलता है. इसे एक्सेप्ट करना होता है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है. अगर यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आपके केस में, देन आप मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है. स्टार्टिंग में सारे स्टेप सेम होते हैं. नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सर्च समथिंग इन द सर्च बार एंड दैट इज डाटा स्टोर. सर्च फॉर डाटा store, and we need to open this data store. Open it. Once it's get open, simply click on the select data store mode. Now from here select a location, and the location will be name 5 United States, name 5 United States. Select this, click on create dataset. Now while it's creating, simply search for the Dialogflow API or simply type API here in the search bar and hit enter button. Wait for this to load. Or you can simply search for the API and services. When you type API, you will see a pop-up API and services and select it. वरना तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो API and services select करेंगे. वहाँ से हमें एक Dialogflow API enable करनी है. ओके, once the page get loaded, simply click on the enable API and services. कई बार वेबसाइट स्लो वर्क कर रही होती है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना है. once the page get loaded, simply search for the Dialogflow and hit enter button. You will see a Dialogflow API. So this is the Dialogflow API. Open it, and we need to enable this. Open it. Click on this enable button and wait for this API to enable. So once it's get enabled, you will see a interface like this. आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा. Once you're done with that, simply come back to the lab. Scroll down to the task 1. Scroll down to the task 1. Keep scrolling. Now you will see in that line number 5, you will see a link. We need to right click on it and click on the private window. Open link in private window. Okay. Wait for it to get open. Once the page get loaded, you will see a terms of service pop up. You need to click on this and click on the accept button. We need to create an agent, so simply click on the create agent button. Now for the agent name, we will come back to the lab and select this help desk. Copy it very carefully without any extra spacing or full stop. ध्यान से copy करेंगे. Come back to here and paste it in the agent name. Make sure starting में भी कोई spacing, extra spacing ना हो. Now in the default time zone, we need to select scroll up. Simply scroll up. We need to select this America and Denver. Now in the Google project ID, we need to select our project ID. क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. अगर किसी केस में अगर आपको प्रोजेक्ट आईडी ठीक से शो नहीं हो रही है, तो एक बार आप वापस जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी Dialogflow API सही से इनेबल हुई है या नहीं. ओके, नाउ वेट फॉर इट टू गेट क्रिएटेड. Once the agent gets created, simply come back to here, scroll down and click on the check my progress button, and you will get a green tick in this task also. Wait for it. You can see assessment is completed. If in any case it throw any error, अगर आपको कोई error आए, green tick ना मिले, तो simply 1 से 2 मिनट वेट कीजिएगा. उसके बाद check my progress पे क्लिक कीजिएगा, आपको green tick मिल जाएगा. Now head towards the second task. Scroll down simply to the task 2. In the task 2, we need to create an intent, and the name of the intent will be submit ticket. So हम ये copy करेंगे. कोर्स के अंदर जो भी है वो कॉपी करेंगे. ध्यान से copy it very carefully. Come back to here. Click on the create intent button. Wait for it to load. Now in the intent name, paste the intent name that we copied, and we need to scroll down to the add phrases, add training phrases. Click on this add training phrases. Now here we need to paste some phrases that will be from tickets to I have a problem. सबसे पहले क्या करेंगे, ticket copy करेंगे. Copy this ticket. Come back to here. Paste it here. Add user expression. Paste it here and hit enter button. आपका एक phrase add हो जाएगा. Now in this way we need to add all the phrases. Submit ticket, problem, issue, I want to submit a ticket, and I have a problem. ये मैं जल्दी से paste कर देता हूँ, add कर देता हूँ. थोड़े से वीडियो को मैं fast forward कर दूंगा यहाँ से. Okay.
तो मैंने आई हैव अ प्रॉब्लम तक सारे अपने फ्रेजेस जो ऐड कर लिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आपके फ्रेजेस दिखने चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक ऑन दिस ऐड रिस्पॉन्स बटन, वी नीड टू ऐड अ रिस्पॉन्स। नाउ कम बैक टू द लेफ्ट फॉर द रिस्पॉन्स, स्क्रॉल डाउन एंड कॉपी दिस, श्योर आई कैन हेल्प यू दैट विद दैट, ओके। कॉपी इट केयरफुली, आपको पूरा कॉपी करना है टिल द एंड, डोंट कॉपी द फुल स्टॉप इन द एंड, जो एंड में फुल स्टॉप है वो कॉपी नहीं करना है। कम बैक टू हियर, पेस्ट द रिस्पॉन्स, okay, paste it under the text response. Okay, now click on this done button, click on the save button, wait for it to get completed. इतना होने के बाद आपको क्या करना है, लैब पे वापस आना है, क्लिक ऑन द चेक माय प्रोग्रेस एंड यू विल गेट द ग्रीन टिक फॉर दिस टास्क आल्सो। यू कैन सी असेसमेंट इज कंप्लीटेड। नाउ हेड टुवर्ड्स द थर्ड टास्क। इन द थर्ड टास्क वी नीड टू कॉपी दिस कोड एंड मेक श्योर आपका कोड कुछ ऐसे दिख रहा हो। अगर आपका कोड ही प्रॉपर लोड नहीं हुआ, इफ इन योर केस द कोड इज नॉट लोडेड प्रॉपर्ली, देन सिंपली रीलोड द लैब, आपको रीलोड करनी है लैब, ओके, और आपका ये कोड जो है प्रॉपर्ली लोड हो जाएगा। नाउ कम बैक टू द लैब, हियर लेट मी सी, डोंट वरी, आई जस्ट एक्सीडेंटली क्लिक समवेयर, आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है फुलफिलमेंट बटन पे, क्लिक ऑन दिस फुलफिलमेंट बटन, click on this OK button if it asks for anything, click on this, wait for it to get loaded. Now here we need to enable the editor, wait for it to get loaded first of all. You will see something like this, click on this enable button, we need to enable inline editor. Now scroll down and remove this whole, select it, remove this and paste the code that we copied. Now move to over that line number 6. Now here we need to replace our project ID with this. So first of all remove this, whatever inside the codes, आपको codes remove नहीं करने हैं, बस अंदर जो है वो remove करना है. Now we need the project ID, so simply copy this as the project ID, come back to here, paste it here. Now click on this package.json. Now here we need to add a dependency. So in the line number 20, click at the last, add a comma and hit enter button. Now come back to the lab, scroll down a little bit, keep scrolling, keep scrolling. Now copy this fourth number of code, copy it, come back to here, paste it here, click on the deploy button, okay. अब deploy करने के बाद ये 4 से 5 मिनट लेगा, it will take 4 to 5 minutes to deploy, so wait for it. Once the deployment get done, we will further continue. तो 4 से 5 मिनट वेट करना है. In that time make sure you hit the subscribe button, hit the like button, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लैब में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, ओके. तो आप वेट करेंगे अब थोड़ी देर. Now you can see our deployment is now completed. You will get a message like this. Simply come back to the lab, scroll down and click the check my progress. You will get a green tick in the task 3 also. Wait for it to get green tick. You can see assessment is completed. And we will head towards the next task. So in this task we need to copy this submit ticket name. We need to copy this name. So first of all copy it from submit ticket to the description. Copy it very carefully. Come back to the lab. Click on this intent. Open it. Here hover upon submit ticket and click on this add follow-up intent. We need to click on the custom. Click on this custom. You will see one more ticket here. Wait for it to load. Now click on this submit ticket custom. We need to first of all rename this. So wait for this page to load. Now we need to rename this. So remove it whole completely. Now paste the name that we copied. Now scroll down. We need to add some training phrases. Once again हमें वही करना है जैसे हमने पहले किया था, तो मैं जल्दी से काम कर देता हूँ. ये चारों phrases जो है हमें ऐड करने हैं एक एक करके. So I will fast forward this video from here. Simply copy this, paste it here, hit enter button, and in this way we will copy paste other 3 phrases. Okay. अब मैंने ये चारों phrases ऐड कर दिया. I added up the 4 phrases. Click on the save button and wait for it to get saved. Once it gets saved, simply click on the done button and wait for 2 to 3 minutes. ये complete होने देते हैं. Intent it's saved. Now what we need to do, once again click on the intent button. We will again click on the intents button, okay. So wait for it to get loaded. Now here click on the submit ticket arrow button. Click on this, open it. Wait for it to get loaded. Simply scroll down. Once it's get loaded, open this fulfillment. Scroll down. Click on this enable webhook call for this intent. Click on the save button. Wait for it to get saved. Click on the done button once it gets saved. Now what we need to do, we need to check this bot whichever we created. So first of all come back to the lab. हमें इसको testing करनी है. Scroll down करेंगे. Keep scrolling. Copy this first phrase that is hi. Copy it. Come back here. Click on the try it now. Paste it here and hit enter button. ऐसा करने से ऑटोमेटिकली आपका आंसर जनरेट हो जाएगा. Come back to the lab again. We need to test it one more time. So come back to here. Copy the second number of the phrase. हमें एक बार और बस टेस्टिंग करनी है, तो हम इसे पूरा कॉपी कर लेंगे ध्यान से. Copy it carefully. Need to test it one more time only. So paste it here and hit enter button. A default message will be generated for us. It means our
bot is working completely fine. Wait for it. You can see here it is. Now come back to the lab, scroll down and click on the check my progress for the task 4, and you will get a green tick in this task also. Wait for it. Try it once again. So we are not getting the green tick here because we missed a step. हमें error throw हो रहा है क्योंकि एक step हमने miss कर दिया. Simply come back to the lab, click on the intents button. We need to enable fulfillment for this different ticket. Wait for this intent page to load it. Simply click on the submit ticket. आपको direct submit ticket पे click करना है. Submit ticket के अंदर एक जो ticket था हम उसको open कर रहे थे इसलिए error आ रही थी. And make sure आपके phrases ऐसे हो, मतलब आपका submit ticket properly open हो गया. Now scroll down, click on this fulfillment. Scroll down, click on this enable webhook call for this intent. Click on the save. पहले जो हमने इनेबल किए थे वेबहोok वो डिफरेंट टिकट के लिए थे, उसको हम एज इट इज रहने देंगे. यहाँ पर हम अपने चेंजेस करेंगे. वेट फॉर इट टू गेट सेव्ड. सेव बटन पे क्लिक करेंगे. जब तक डन नहीं आ जाए तब तक हमें कुछ नहीं करना है. नाउ वी कैन टेस्ट आवर एजेंट. सिंपली टाइप हियर, ट्राई इट नाउ, टाइप हाई एंड हिट एंटर बटन. And the result must be like this: good day, what can I do for you? Now we need to test for the different phrase, so simply scroll up and copy the next phrase, come back to here, paste it in the try it now and hit enter button. Wait for the default answer to be loaded up. And the phrase must be look like this. अगर आपका phrase ऐसा आ रहा है मतलब अब हमारा कोई भी error नहीं रह गई. Come back to the lab, scroll down, click on the check my progress, and this time you will definitely get a green tick. As you can see, assessment is completed. Now our lab is completed. Congratulations. You can click on the end lab button, click on the submit button, give the star rating that you want to give. You can also leave an additional comment if you want. Click on the submit button. Now come back to the main page to check whether if really this lab get completed or not. तो main page पे आएंगे, green tick मिल चुका होगा lab के आगे, तो मतलब lab complete हो गई. Wait for the page to load it up. Now scroll down, open it, and you will see a green tick beside this lab. It means we successfully completed this lab. So this is the solution of this lab. If you like the video, make sure you hit the like button, hit the subscribe button. If you have any query, you can ask me in the comment box or on the Telegram group. Okay, so that's it for this video. Thank you very much.